Hello everyone, myself Vijendra Gupta, and today we are going to discuss linear equation into variables for class 9. So students, just fast tell me that am I audible? Tell me guys, am I audible? So how many joined? Okay, so I welcome you all on the behalf of me and Mark family. So students, am I audible? Fast write in chat box that we are now communicate to each other by the chat. So start करें. Myself Vijendra Gupta. Today I am your maths tutor and we are going to discuss linear equations. Questions from the Olympiads, from the different books and different things. Okay, so let's start. So in the class, how many students are there in the class? Okay, चलिए. Question number one. This is the question number of one for the day. Alone, A alone can complete a walk in 16 days and B alone in 12 days. Starting with A, they can work on alternate days. The total work will be completed in how many days? Option A, 12 days. Option B, 13 days. Option C, 13 integer 5 upon 7 days. And the last option, 13 integer 3 upon 4 days. Okay, so take 2 minutes to solve this and give me the answer. I hope am I audible and visible to everyone? Give me thumbs up. Uh, A alone can complete a work in 16 days. Any A is a person which can complete a work in 16 days. And the work can be completed by B in only 12 days. Means B is faster than A. Now starting with A. Now starting with A, they can work alternate days. The total work will be completed in how many days? Means first days A is working, in second days B is working, then third days A is working, then fourth days B is working. So alternate days one, first day, third day, fifth day A is working. Second day, fourth day, sixth day B is working. So this process is going on. So in how many days? In how many days? The total work will be completed. Now, so for these questions, if A can complete in 16 days, so in this question, this type of question, actually, this is a not a direct variation. This is a indirect variation. This is a indirect variation. If you increase the person, the number of days are decreased. If you increase the number of person, the total days are decreased. If you decrease the number of person, the total number of days are increased. Means if one person can work
work for 16 days, then two-person can finish that work in 8 days only. Right? If one person, if one person can finish in 16 days, so two-person can finish in 8 days. Four-person can finish in 4 days. 8% can finish in 2 days. So if increasing, then number of days are decreasing. So this is the indirect variation, not direct variation. Whenever indirect variation is there, then we use indirect variation. A1 upon A2 is equal to B2 upon B1. So in this type of question, always do one thing. Just try to find out the work done in 1 day only. Work done in 1 day only. So if A can complete work in 16 days, then A can complete how many portion of the work in 1 day? So this is 1 upon 16 part. So work completed in 1 day is 1 upon 16 part. तो A 16 days में complete कर रहा है, this is fine. तो एक दिन में कितना complete करेगा? 1 upon 16. Similarly, B कितने दिन में complete कर रहा है? 12 days. B is finishing the same work in 12 days. So work done by completed in 1 day by B is 1 upon 12. Okay, this is complete. Now look at here. So 1 day work by A, this is 1 upon 16, and by B, this is 1 upon 12. Now, first day कौन काम करेगा? A, then B, then A, then B. So A, B, A, B. कितने दिन तक? Let's suppose X days. Let's suppose X days. So this is 1 upon 16. This is 1 upon 12. This is 1 upon 16. This is 1 upon 12. And this process is till X days. And in X days, the whole work is completed. How many work done is there? Only. Now you can simplify it and you can solve it. अब चेक करो 1/16 कितने टाइम्स आ रहा है? हाफ टाइम्स. 1/12 कितने टाइम्स आ रहा है? हाफ. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x/2 इंटू 1/16 प्लस x/2 इंटू 1/12. ये टोटल कितने बार रिपीट हो रहे हैं? x टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. तो x/2 टाइम्स कौन आ रहा है? 1/16. और x/2 टाइम्स कौन आ रहा है? 1/12. दोनों मिलके कितना बनना चाहिए? 1. बस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज x अपॉन 32 plus x upon 24 is equal to 1. Take the LCM. LCM is 48, 48, no, 96. Okay, so this is 3x plus 4x is equal to 1. So from here you will get 7x upon 96 is equal to 1. And the final x is equal to 96 upon 7 days. तो कितने डेज चाहिए? 96 upon 7. Now come to the options. 96 upon 7. आंसर क्या था? 96 upon 7 days. ऑप्शन एक भी नहीं है तो कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. So this is 13 integer 5 by 7 days. So answer is C. Third option is the correct. So this is the question and this is the method how we solve the question. Okay.
Just go through the question and solution. I'm repeating the solution. Kalpesh Makadia. Hello Kalpesh, how are you? Kalpesh, now clear? The solution is clear to you? A, complete 1 upon 16th part in one day. B, complete 1 upon 12th part in one day. नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है कि वो पूरा कंप्लीट वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं. लेट सपोज एक्स डेज में वो कंप्लीट करते हैं. नाउ क्वेश्चन सेज दे आर वर्किंग अल्टरनेट. एक साथ वर्क नहीं कर रहे, अल्टरनेट वर्क कर रहे. तो हमने क्या किया, हमने अल्टरनेट वर्क करवाया. पहले ए, देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी, लाइक दिस. हाउ मेनी डेज? एक्स डेज. तो वन अपॉन ए ने कितने टाइम वर्क किया, जितने दिन थे उसके हाफ डेज, मींस एक्स बाई टू. और बी ने कितने टाइम्स वर्क किया, अगेन एक्स बाई टू. नाउ सोल्व फॉर दिस. इफ यू सोल्व you will get the answer for x, that is 96 upon 7, and 96 upon 7 it is 13 integer 5 by 7. So answer is 13 integer 5 by 7 days. Okay, now let's move for the next question. Question number 2. If 6 years are subtracted from the present age of Gagan and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Anup is obtained. If Anup is 2 years younger to Madan, whose age is 5 years, then what is Gagan's present age? बड़ा सारा question है. So you have to be patient while doing the question. Such type of question, first you have to give the time to read the question. If you read properly, answer will be correct. Otherwise, you will get incorrect answer. So we'll read it again. If 6 years are subtracted from the present age of Gagan and the remainder is divided by the 18, यानी हमने अगर जो भी गगन की एज है उसमें से 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचेगा दैट रिमाइंडर को डिवाइड करने, किससे डिवाइड करने पर, 18 से डिवाइड करने पर उसका जो ग्रैंडसन है अनूप, उसकी एज मिल जाएगी ना. अनूप इज 2 years यंगर टू मदन. अनूप जो है वो मदन से 2 साल छोटा है और मदन की एज क्या है, 5 year. देन व्हाट इज द गगन प्रेजेंट एज? तो गगन की प्रेजेंट एज क्या है, दिस इज द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को हम नीचे से सोल्व करते हैं. क्वेश्चन से मदन 5 years ओल्ड. मदन कितना है, 5 years ओल्ड. Now, Anoop is 2 years younger to Madan. Anoop is 2 years younger is Madan. So Anoop will be 5 minus 2 is equal to 3 years. तो Anoop की एज क्या होगी, 3 years. Now this line is gives you the age of Anoop. This line gives you the age of Anoop, and this line says 6 years subtracted from the present age of Gagan. Let's say Gagan is X year old. Let's suppose Gagan is X year old. Okay. So, according to the question, X minus 6 upon 18. X minus 6 upon 18 is equal to Anup, and Anup is 3 years old. So, X minus 6 is equal to 54. So, X is equal to 60. So, where is 60? In the option number 2, X is 60. So, option number B is the correct answer. Means Gagan is 60 years old now. This question is not a difficult one, बस थोड़ा सा लेंदी है. दिस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्वेश्चन रीड करने पर.
सोल्यूशन में बहुत टाइम नहीं लगेगा. यू हैव टू गिव द टाइम टू रीड द क्वेश्चन. Okay, now let's move for the next question. Question number 3. This is the third question of the day. A man, a woman, and a boy can complete a job in 3, 4, 12 days, respectively. How many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/4 of a day? सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है. वेरिएशन क्या है कि हमें काम कंप्लीट 1/4 ऑफ डे में कर, एक दिन से जल्दी कर देना है, और उसमें सिर्फ एक मैन और एक वुमेन वर्क कर रहे हैं. बट नंबर ऑफ बॉयज कितने हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, जिसकी वजह से वो वर्क 1/4 डे में कंप्लीट हो जाएगा. मेन 3, वुमेन 4 days एंड बॉयज 12 days में कंप्लीट करता है. मीन सबसे फास्ट कौन है? मेन. देन थोड़ा सा स्लो है वुमेन, एंड बॉय थोड़ा ज्यादा स्लो है. ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा, वन डे का वर्क फाइंड आउट करना है. We have to find out the work for 1 day. So A is 1/3, B is 1/4, and C is 1/12. यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करते हैं. 3, 4 and 12. इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम, तो एलसीएम आता है आपके पास 12. एलसीएम क्या आता है? 12. ओके, तो मीन्स अगर 12 days हैं तो 12 days में ए 4 टाइम्स कंप्लीट कर सकता है, बी 3 टाइम्स कंप्लीट कर सकता है, और सी सिर्फ एक ही टाइम्स कंप्लीट कर सकता है. मीन्स ए सेम काम को 4 टाइम्स कंप्लीट कर लेगा. बी जो है वो 3 टाइम्स, मीन्स वुमेन 3 टाइम्स कंप्लीट कर सकती है, और सी 12 टाइम्स कंप्लीट कर सकती है, 1 टाइम्स कंप्लीट कर सकती है. ठीक है, अब हमें 1/4 डे में कंप्लीट करना है. 1/4 डे में कंप्लीट करना है. तो 1/4 डे में कितना होगा? 1/3 प्लस 1/4 प्लस x/12. Why x/12? Because number of, let's suppose number of persons are, number of boys are x/12, means x. तो एक बॉयज अगर 1/12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक्स बॉयज कितने हो जाएंगे? 1/12. So that's why x/12. And in how many days? 1/4 days. So just simplify it. 1/4. This is 4 plus 3 plus x/12. And this complete, how many work is completed? One work is completed. So always equal to 1 करना. पिछले क्वेश्चन में हमने 1 कंप्लीट किया था. Now simplified, 7 plus x is equal to 48, x is equal to 41. तो कितने स्टूडेंट, कितने बॉयज रिक्वायर्ड है? 41. So D option is the correct answer. Okay, so here D option is the correct answer. So look at the question and solution and check which is it clear to everyone or not. I think clear to everyone. Okay, let's move for the next question. That question number 4. All questions are very important question and very good questions, and all are from the various exams.
This is the next question, and question is says 16 children are to be divided into two groups A and B of 10 and 6 children. The average percentage marks of obtained by the children of group A is 75, and the average percentage mark of the all the children is 76. What is the average percentage marks of the children of group B? Okay, इसको कुछ हम इस तरह से करते हैं. 16 children are divided in two groups, group A and group B. In group A, 10 students, and in group B, 6 students. Average marks for group A is 75. For group B, we have to find the average marks. So let's suppose average marks are X for group B. And for total, average marks are 76. Okay, now let's move the working space. I just copy it and paste to the our working space. So we'll solve. Okay, so this is the question. Now you know that average is equal to total upon total sum upon total number. Okay. So average. So for group A, 75 is equal to sum upon 10. For group B, X is equal to sum upon 6. For total, 76 is equal to sum upon. इसमें यहाँ पर हम sum 1, sum A, सम बी एंड सम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा सम है. सम ए फॉर ग्रुप ए, सम बी फॉर ग्रुप बी एंड सम फॉर टोटल, and the total students are 16. So now you'll get some expressions here, and the expression sum A is equal to 750, sum B is equal to 6x, and total sum is equal to 76 into 60. 76 into 60 is equal to 76 into 60. So what is the 76 into 60? Okay, now sum is total sum है वो 16 स्टूडेंट का सम है. सम ए है वो 10 स्टूडेंट के मार्क्स का सम है, और सम बी है वो 6 स्टूडेंट के मार्क्स का सम है. तो अगर मैं सम ए और सम बी दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल स्टूडेंट का सम आ जाएगा. यस और नो? अगर हम दोनों को ऐड कर दें, हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा. यस और नो? तो कर देते हैं हम. ओके, इसका वैल्यू 1216 हो जाएगा. तो 750 प्लस 6x इज इक्वल टू 1216. So now 6x is equal to, just change the values, 1216 minus 750. This is equal to 466. Okay, so now from here you will get x is equal to 466 divided by 6, and this is 77.66. 77.68. So you will get average of group B
is 77.67. चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है. 77.67. This option number B. 77.67 can be written as 77 integer 2 by 3. So option number B is the correct answer. Option number B is the correct answer. Clear? So this is the question and this one is the solution. Now, next question. We'll move for the next question. Find the values of the integer a and b respectively for which the solution of equation x root 2 is equal to x root 3 plus root 6. Okay, now we have to simplify this equation and the last is compare with this. We have to simplify this and we have to compare with this. Okay, so let's the simplification. Let's do the simplification. X root 24 minus x root 3 is equal to root 6. Root 3 you can take the common. So this is x root 8. Okay, x root 3 can be taken as a common. X root 3. So this will be root 8 minus 1 is equal to root 6. So x is equal to root 6 upon root 3 root 8 minus 1. अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये रूट 3 से रूट 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाए. So you will get the answer x is equal to root 2 upon root 3 root 8 minus, sorry, root 3 is already cancelled out, so root 8 minus 1 in denominator. In numerator it's root 2. If you compare with this, the numerator is 7, but here x is root 2 upon root 8 minus 1. In numerator there is a rational number, so you have to rationalize. To make the denominator rational, we have to rationalize, and for this you have to multiply with rationalizing factor, and rationalizing factor is root 8 plus 1 upon root 8 plus 1, multiplying dividing with rationalizing factor RF. Okay, just simplify it. I'll simplify it in our space. Okay, so I copy it. Let's move here. Now x is equal to, just multiply root 2 with, so this is root 16 plus root 2 and denominator root 8 minus 1 upon root 8 plus 1. So this is 8 minus 1. So this is 4 plus root 2 upon 7. This is your answer. This is your answer. Now this is going to be compare with x is equal to a plus root b upon 7. मीन्स ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है. अगर ये दोनों सेम है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू इक्वल टू 4 एंड b रूट के अंदर जो है वो b है और रूट के अंदर क्या है 2. तो a is equal to 4 and b is equal to 2. Now check the option. A is equal to 4 and b is equal to 2. First option is the correct. I hope the solution is clear to everyone.
Let's move for the next question. Which of the following are solution of the equation? This question is a very easy question, not a difficult one. You can check with the option. Just take 2 minutes to solve this question, and then I'll discuss. Okay, just take 2 minutes fast. Let's say who will give the answer first. Solve करें. Yes. This is x and this is y. Replace x is equal to 2. 2 into 2 into 3 plus 3 into 2. 3 into 2 is equal to 12. And the answer is 12. 12, 12. So this option should be the correct answer. A is a correct answer. But let's check for B, C, D. हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए. अगर दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो भी आंसर हो सकता है. तो लेट्स चेक. बट आप चेक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है रूट में, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? रूट में आंसर आएगा. इसका आंसर किस में आएगा? रूट में आंसर आएगा. और अगर आंसर रूट में है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो रूट में है. तो बी ऑप्शन को हम चेक करते हैं. 2 into 2 plus 3 into 3. The answer is 13. So this one is wrong. Definitely it's wrong. थर्ड ऑप्शन गलत है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ ऑप्शन सॉरी. 2 into 3 plus 3 into 2 by 3. So this is going to be 8. Again, this 8 is not equal. So fourth option is also wrong. The answer is A is the correct answer. तो जब भी आपको सोल्यूशन चेक करना है, सोल्यूशन चेक करना है कि किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वो सोल्यूशन है या नहीं है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इंस्टेड ऑफ एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वाई सेकंड कोऑर्डिनेट. रिप्लेस करो. अगर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वो सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है. बिकॉज वी से दैट सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन. इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? सोल्यूशन सेटिस्फाई. I think am I clear to everyone? Let's move next one. Two numbers differ by 5. If their product is 336, then the sum of the two number is, yes, this question is an easy one and good one. Take 2 minutes to solve this. I'm waiting for the answers. The question is two numbers differ 5 by 5. If their product is 336, then the sum of the two number is, उन नंबर्स का सम क्या होना चाहिए? अगर दो नंबर कुछ ही होते तो हम डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते थे, बट यहाँ पर दोनों नंबर का सम पूछ. हम क्या कर सकते थे? दोनों नंबर्स को रिप्लेस कर, जैसे ऑप्शंस में अगर होते 8 10 9 15 तो हम ऑप्शन में चेक कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है, तो हमें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट. क्वेश्चन इज अ वेरी गुड. तो सेज टू नंबर्स हैं तो हमें नंबर अज्यूम करने होंगे. कौन से नंबर रखे? एक्स और एक्स प्लस 5.
दो नंबर का डिफरेंस 5 है, तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर x+5 हो सकता है, x-5 भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, x+5 और x-5, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो 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 नीड टू वरी। अगर ऐसा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? x-+5 = 336। मल्टीप्लाई करो, x² + 5x = 336। तो x² + 5x - 336 = 0. Here, a quadratic equation is there. So, this quadratic equation is simplified by splitting the middle terms. तो splitting the middle terms, तो split करने हैं हमें, split करो, क्या आंसर आएगा? Split करो, you have to split here. 336 को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर मल्टीप्लिकेशन 336 आए और हमें एडिशन करने पर 5x आए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा, अगर आप ध्यान दो या अगर चेक करो तो देखो, ये सिंबल माइनस का है और यहाँ पे सिंपल प्लस का है, तो इसके जो भी दो पार्ट्स होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और प्लस वाला पार्ट्स बड़ा होगा माइनस से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? 336 दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 336 है, और एडिशन 5 यानी उनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। डिफरेंस 5 होगा तो हम 15 20 ले सकते हैं, जैसे 15 अगर 20 लेंगे तो 300 नहीं, थोड़ा और बड़ा चलते हैं, 16 21। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि 16 21 क्या आता है, तो हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। 16 × 21 = 336 ईयर्स। तो 16 और 21 दो इसके पार्ट्स हो गए, x² + 21x -16x -336 = 0. So take x common here, x plus 21. Take -16 common, x plus 21 = 0. So you will get x plus 21 and x minus 16 = 0. So we will get x is equal to 16 and -21. नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं की है तो नेगेटिव नंबर्स हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू 16 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 16 एंड 21। तो दो नंबर्स आ गए आपके पास, 16 और 21। दोनों को ऐड करके जब आप देखोगे तो आप एडिशन करने पर आंसर आएगा 37। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एम आई क्लियर? ओके, सो एनी डाउट हियर? यहाँ पे कोई दिक्कत? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the ages of father and son is 45 years. Again, sum is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 34. Find the age of son and father respectively. जो कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो father, let's suppose x, and son, let's suppose y. So x plus y is equal to 45. Means present age of father is x and present age of son is y. 5 years ago, age will be x minus 5 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 5। 5 साल पहले उनकी एज 5 5 ईयर कम से हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? x -5 × y -5, दैट इज 34।
दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लेट्स मूव फॉर द सिंप्लीफिकेशन एरिया। या लेट्स सिंप्लीफाई। सो एक्स वाई, यू कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वाई, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी और यह वाई हो जाएगा आपके पास 45 minus x. So here x minus 5, 45 minus x minus 5 is equal to 34. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। अगर और नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5, 40 माइनस x इज इक्वल टू 34। नाउ मल्टीप्लाई 40x, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 40x minus x square minus 200 plus 5x is equal to 34. So this is x square minus 55x plus 234 is equal to 0. X square minus 45 plus 234 is equal to 0. Again quadratic equation, तो आपको क्या करना पड़ेगा, splitting the middle term। तो किस किस में इसमें स्प्लिट करना है वो हमें फाइंड आउट। तो मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर आप चेक करोगे, साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी दोनों माइनस के होने चाहिए, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, करते हैं। तो 234 मल्टीप्लाई, अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं 40 और 5, 40 और 5 200 नहीं होगा, तो 39 और 6, 39 और 6, तो 39 इंटू 6 इज इक्वल टू 234। तो इसके जो फर्दर ब्रेकअप होंगे वो होंगे 39x minus 6x plus 234 is equal to 0. So x minus 39 minus 6 x minus 39 is equal to 0. So x minus 6 x minus 39 is equal to 0. तो x is equal to 6 and 39, तो आंसर हो जाएगा 6 and 39। 6 and 39 ऑप्शन है क्या? Come to the option, yes, first option नहीं है, first option is the correct answer. So this is the question, how we do the solution. Okay, सम दिया हुआ है 45, तो एक को हम x अज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को y अज्यूम कर लेते हैं, दोनों का सम हो गया x plus y 45। Here is the equation. Now 5 years ago the product is 34, so 5 years ago the product is 34. There are two equations, first equation and second equation. From first equation we have replaced y and we'll get the quadratic equation. Quadratic equation is simplified by the splitting the middle term, and here we split the, so split is minus 39 and minus 6. So answer is 6 and 39. So 6 here is son and 39 here is father. Okay, let's move for the next question. 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participate in social work project. If the number of participating students is 300, out of which 100 are boys, what is the number of students in the college? Let's suppose number of students in the college is x. जो हमें चाहिए उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, x। टोटल स्टूडेंट
is equal to x. Now according to the question, 1/3 of the boys and 1/2 of the girls, ये जो x स्टूडेंट हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉयज एंड गर्ल्स. तो लेट्स boys are no, boys are b and girls are c. Let's suppose boys are b and girls are b. 1/3 of the boy b upon 3, half of the girls g upon 2. If the number of participating student is 300, total participating student is 300, means दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा 300. 100 are boy, so b upon 3 is equal to 100. इस तो ये अगर 100 है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200. मीन्स गर्ल्स कितनी हो गई 200 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है. सो मीन्स b अपॉन 3 इज इक्वल टू 300, तो b इज इक्वल टू 300, मतलब टोटल बॉयज कितने हैं 300. g अपॉन 2 इज इक्वल टू 200, सो g इज इक्वल टू 400. गर्ल्स कितनी है 400, बॉयज 300, गर्ल्स 400, तो टोटल कितने हो गए 400 प्लस 300 700. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, 1/3 of the boys b upon 3, boys upon 1/3 of boy, plus girls upon 2, means to, half of the girls is equal to 300. Total participating boys are 100, so participating girls are 200, because both are 300. Just equate with the total students, you will get the answer boys 3 girls 4, total 700. Next question, P can do a work in 15 days, Q can do it in 20 days. If they work on it together for 4 days, the fraction of the total work is left. दोनों ने 4 दिन वर्क किया लगातार, दोनों ने साथ मिलकर काम किया. पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑल्टरनेट डेज में वर्क किया था, ऑल्टरनेट डेज. अभी क्या हो रहा है, साथ कंबाइंड काम कर रहे हैं. तो वो 4 दिन में जितना भी वर्क करेंगे कितना रिमेनिंग रहेगा, तो ठीक है जितना वर्क कर रहे हैं उसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे 4 डेज के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे. जब भी वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं वर्क डेज, तो हम हमेशा 1 डे का वर्क फाइंड आउट करते हैं. तो P 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है तो 1 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, इट्स 1/15. सेम फॉर Q, इट्स 1/20. सो 1 डे वर्क, 1 डे by P is 1/15 and by Q is 1/20. If दोनों both work together, तो 1 डे में कितना काम हो जाएगा, दोनों मिलकर कितना कंप्लीट कर देंगे 1/15 प्लस 1/20. LCM is 30, 60, 4 plus 3, 7/60 वर्क. एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे 7/60. ठीक है, तो बस 4 डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं 4 डेज के लिए, तो 7/60 into 4, दिस इज 7/15 वर्क. कितना वर्क कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीटेड वर्क इज 7/15. तो रिमेनिंग क्या है 1 minus 7/15, this is 8/15. So remaining work is 8/15. So your answer should be 8/15. 8/15 है ऑप्शन में, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट. दोबारा सुनिए, P can do a work in 15 days, तो 1 डे में 1/15 वर्क करेगा. Q 20 डेज में वर्क फिनिश कर रहा है तो 1 डेज में कितना वर्क फिनिश करेगा, इट्स 1/20. So 1 day is if both working together, so they will finish in 1 day is 1/20 plus 1/15 is equal to 7/60.
Means 7 upon 60 part will be finished by both in one day. If they are working for 4 days, then they will finish the work with 7 upon 15th part. So remaining part is 1 minus 7 upon 15, that is 8 upon 15th part. So 8 upon 15th part is the answer. I think, am I clear to everyone? Yes or no? Let's move for the next question. Move correct? Yes. A farmer traveled a distance of 61 km in 9 hours. He traveled partially on foot at the rate of 4 km per hour and partially on bicycle at the rate of 9 km per hour. The distance traveled on foot is. Just look at the question. Look at the variety of the question. Farmer traveled 61 km in 9 hours. वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक 9 आवर्स के लिए ट्रेवल किया है और टोटल डिस्टेंस था 61 किलोमीटर. उसने ट्रेवल करने के लिए दो मोड यूज किए. द मोड वन इज बाय फुट एंड द मोड टू इज साइकिल. फुट पर जब बाय फुट वो मूव कर रहा है तो थोड़ा स्लो मूव करेगा. द स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर. साइकिल पर उसका स्पीड था 9 किलोमीटर पर आवर. अब आपने फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस साइकिल से ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया. ठीक है. लेट्स solve the questions. uh, Look at here. Total distance is a a and b. The distance is 61 kilometer. The distance is 61 kilometer. Let's suppose he traveled x kilometer. Let's suppose he traveled x kilometer by foot and 61 minus x kilometer on bicycle. Okay. Speed is on foot is 4 km per hour and is 9 km per hour. Time is total time is 9 hours. Total time is 9 hours. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो t1 इज इक्वल टू x अपॉन 4. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और साइकिल से कितना टाइम लगा? t2 इज 61 माइनस x अपॉन 9. So this is the time. If we add both time, you will get the answer is 9. Why 9? Because total time is equal to 9 hours. This is given in the question. So T1 plus T2 is equal to 9. X by 4 plus 61 minus X upon 9 is equal to 9. Okay? Yes. Now take the LCM. 36 is the LCM. So 9x plus 4, 61 minus X is equal to 9. So if you cross multiply 9x plus 244 minus 4x is equal to 144. No, it's not 144. It's 324. It's given for it's 324. So 5x is equal to 324 minus 244.
So 5x is equal to 18, x is equal to 16, x is equal to 16. तो x कौन था? बाई फुट। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाई फुट। यस, तो 16 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो 16 किलोमीटर उसने बाय फुट ट्रेवल किया है। रिमेनिंग पार्ट 61 माइनस 16 इज ट्रेवल्ड बाय bicycle. Okay, let's move for the next question. And this is the last question of the day. We have time limit, so we will not move further. The next question is two men start from point A and point B respectively, 2 kilometers apart. So point A and point B is 42 किलोमीटर apart. One walks A to B means इस तरफ मूव करता है और दूसरा इस तरफ मूव करता है। स्पीड 4 किलोमीटर पर हार एंड सेकेंड की स्पीड होगा, स्पीड नहीं गिवन है, लेट सपोज x किलोमीटर पर हार। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, वो कहीं यहाँ पर मीट करते हैं और टाइम कितना है? 6 आवर्स मीट करते हैं, यानी दोनों ने कितना मूव ट्रेवल किया है? 6 आवर ट्रेवल किया है। कितना मूव किया है? 6 आवर ट्रेवल किया है। तो इन 6 आवर्स ही ट्रेवल्स 24 किलोमीटर। तो ये कितना ट्रेवल करेगा? 6x किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो 24 plus 6x is equal to 42. 6x is equal to 18. X is equal to 3 किलोमीटर पर हार। मीन्स वो पर्सन बी किस स्पीड से मूव कर रहा है? 3 किलोमीटर पर हार से मूव कर रहा है। वापस से एक बार थोड़ा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। From point A, the person moves with this 4 kilometer per hour for 6 hours, so 24 kilometer. From point B, the person moves with x kilometer per hour for 6 hours, so distance traveled by the person B is 6x. So total distance is 42 kilometers. So 24 plus 6 is equal to 42. So if you simplify, x is equal to 3. X is equal to 3. So 3 kilometer per hour. Okay. So this is for today. We have completed our session. I think all question is clear to everyone. If is there any doubt, you can move, you can write in the chat box. I'll provide this